Hello students, welcome to class 12th. Today we will discuss about some related topics from Coulomb's law. That's mean limitations of Coulomb's law, electric field, forces of multiple charges, or it is also called superposition of principle, and some other physical significance of electric field. Okay, now in class 12 Coulomb's law is given by two charge placed at some distance between r, and the limitations of Coulomb's law is not applicable in all the situations. It is valid only under some conditions. The first is electric charges must be at rest. Electric charges, that's mean if two charge q1 and q2 are placed some distance r, then both of charges is at rest. Okay students, if one charge is rest and another charge or second charge is at move, then it can applicable. If both our charge are in moving condition, then Coulomb's law is not applicable on this charge. Second point, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज. दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉइंट साइज होने चाहिए. यानी कि कंडीशन ये है, इफ़ बोथ आर चार्ज प्लेस्ड एट नियर अबाउट एंड वेरी मिनिमम साइज नैनोमीटर, then both of charge r is at point charge. बट कंडीशन ये भी डिपेंड करती है कि हम उन चार्ज को किस मेजरमेंट से कंसीडर करना चाहते हैं. सपोज दैट हमारे पास वी हैव अ फुटबॉल, और फुटबॉल को जब हम पास से देखेंगे तो हमको वो बहुत बड़े साइज़ की दिखाई पड़ेगी, और फुटबॉल अगर हमसे काफ़ी बहुत डिस्टेंस पर रखी हुई है तो वो फुटबॉल हमको पॉइंट साइज़ दिखाई पड़ेगी. तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हम उस पॉइंट साइज़ को मेज़रमेंट कहाँ से कर रहे हैं. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज. यानी कि जो सेपरेशन होता है दोनों का वो ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, दैट्स मीन 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर देन ही होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज in your NCERT, the next point is force between multiple charges. Forces between multiple charges. Suppose that an origin, if charge q1, q2 and q3 are placed from the distance of r1, r2 and r3 from the origin, then we have discussed in previous lecture or Coulomb's law, if two charge are placed at some distance from the distance r, then the both of charge applying a force to each other, F equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. F equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Okay, then forces between multiple charge is called superposition of principle. Superposition of principle or forces of multiple charge. Okay, listen. This principle states that when a number of charge are interacting, the total force on a given charge is a vector sum of the force exerted on it due to the all other charges. Therefore, F1 is vector form equals to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector and dot F1 n vector, where n is a natural number.
Okay students, let a point charge q1, a point charge q2, a point charge q3 are placed some distance r12. The distance between q1 and q2 are r12. Distance are q2 and q3 are 3 2 or r3 2 3 something else. O is the origin having distance r1, sorry r2, and this is r1, this is r3. Therefore force between 1 to 2. Okay, F12 का मतलब है जो फोर्स लगेगा 1 ड्यू टू 2, कितना फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 square. Okay, and a unit vector r12 cap. In previous lecture we have discussed what is the meaning of unit vector. Unit vector is defined as r12 vector is defined as magnitude of the vector यानी r1 minus r2 upon mod r1 minus r2. Okay, r12 vector is written as equals to r1 vector minus r2 vector is to magnitude, therefore square of this, square of this. Now we have written r12 cap is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 r12 square, that's mean mod r1 vector minus r2 vector is to whole square, and r1 vector minus r2 vector mod r1 minus r2 vector. Okay students, now therefore the value of f12 vector is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 r1 vector minus r2 vector whole upon r1 vector minus r2 vector mod q f12. Similar, if the charge r changes, f13 equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q3 upon mod r1 vector minus r3 vector mod cube r1 vector minus r3 vector. Okay, therefore all of charges are the vector sum. Vector sum the force exerted on the due to all other charges. Therefore f1 equals to f12 plus f13 plus f14. There then we have seen about 1/4 pi epsilon naught q1, 1/4 pi epsilon naught q1 common, then f1 equals to 1/4 pi epsilon naught q1 and q2 upon r1 vector minus r2 vector mod cube plus q3 r1 vector minus r3 vector mod cube and r1 vector minus r2 vector, similarly here r1 vector minus r3 vector, and plus dot dot so on. Therefore we can write here in a very simple form, F vector equals to total force acting on charge of Q equals to Q upon 4 pi epsilon naught
sigma all point charge q dash r 1 vector minus r n vector whole upon mod r1 vector minus r n vector q f vector. This is the force of multiple charge or superposition of principal. Okay students, now the second point is electric field. What do you mean by the electric field? Electric field. Electric field, listen. The electrostatic force per unit electrostatic force per unit test charge acting a small positive test charge placed at the given point. Therefore, mathematically we can write here electric field is represented as E vector equals to limit q0 tends to infinity 0 f vector upon q naught, force per unit charge, and the unit of electric field is unit of force is Newton and unit of charge is Coulomb, Newton per Coulomb. Okay, Newton per Coulomb. Okay students, now the dimension of force is mlt minus 2 and the dimension of charge is at. Therefore the dimension of electric field is mlt minus 3 a minus 1. Okay students, now the next point is electric field. You know that when the positive charge is placed at a point, therefore the electric field lines are radially outwards when the point charge, that's mean if plus q is situated at that point, the electric field lines are radially outwards. And when the negative charge are placed at a point, then therefore electric field lines coming at this side or radially inward direction. Okay students, then when the point charge is positive, then the electric field lines are moved away from the charge, and when the negative charge are placed at a point, therefore electric field lines are coming or radially inward direction. Okay students, now the next point is what is the significance, what is the physical significance of electric field. So then the force on charge placed at the point, Coulomb's force q0, if the Coulomb's force of a charge q0 due to source q may be treated some stage, source charge q produce a defined field at every point. Okay, and the next point, the value of E vector or electric field at any point determine the force of charge q at the point at the force. Now the next point is electric field due to a point charge. Electric field due to a point charge.
Okay students, electric field due to a point charge. Consider a point charge placed at the origin. Suppose that this is a origin and point charge placed at the origin. इसको हम सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं. ओके, सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं. नाउ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P at a distance r from it. Point P r from it. Okay, now suppose that a Q0 test charge placed at the point Q0 test charge placed at the point P. Therefore force applied on this and this charge F vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 upon r square. Okay, now electric field E is given by force per unit charge. Therefore this value is placed in this point, and 1 upon 4 pi epsilon naught electric field E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 upon r square whole upon Q0. Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया. Therefore electric field E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square, or E equals to KQ upon r square, where K is the 1 upon 4 pi epsilon naught, or K equals to 9 into 10 to power 9 is the value of air. Okay students, now the next point of this chapter is electric field due to a system of point charge. Electric field due to a system of point charge. Same thing when the electric field due to a force of point charge or multiple of force or superposition of principle. Same thing, different of forces are applied to a point. Suppose that a point charge Q1, Q0 or Q0 and Q2 are placed some distance apart from the origin O, having different positions from the vector. This is called r1 vector, this is called r1 vector, this is called r2 vector, and the force applied. आप याद रखिएगा जिस तरफ फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता है. तो Q2 जो है वो Q0 या Q0 के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा जो हमारे पास इस तरफ होगा. इसको हम लोग E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे. Q1 जो होगा वो इस तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे. Q1 Q0 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा वो इधर की ओर, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इसके बीच में होगा. देयरफॉर फोर्स हमारे पास क्या आएगा, ड्यू टू 1 फोर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q0 upon r square, and r1, and if the Q0 is placed at point P तो इसको हम 1P कह देते हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर अपॉन Q0 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1P स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सिमिलर E2 वेक्टर अप्लाइड अनदर फोर्स K Q2 अपॉन R2P स्क्वायर. सिमिलर E3 इक्वल्स टू K Q3 अपॉन
3 square p. Okay, then the इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्ज, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो इसके ओर अप्लाई हो रहे हों, देयरफॉर E इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर. देयरफॉर वी हैव seen K is the common of all every electric field. K1 upon R1 P square plus K2 upon R2 P square plus dot 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 Q n upon R n P square. Okay students, and this will be written as K sigma I equals to 1 to n K n Q n upon R n P square. E equals to, okay, therefore E equal to K sigma I equals to 1 to n, where Q n upon R n P square, where K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Therefore E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught sigma I equals to 1 to n Q n upon R n P square. Okay students, now the next point of the electric field due to system of charge, physical significance. Okay, we have discussed in previous what is the physical significance of electric field. Physical significance of electric field is physical significance of electric field. Number 1, the source charge Q produces a defined field E vector R at every point R vector. Second, the value of E vector R at any point R vector determine the force on charge Q0 at that point. Therefore F vector equals to Q naught E vector R. ओके, और ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से आई? बिकॉज वी नो दैट ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. देयरफॉर वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एफ वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर आर एंड क्यू नॉट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field at an axial point, electric field at an equatorial point, and electric field lines. Listen, next point, electric field lines. Some important lines, some important properties which is related from electric field lines. Then we have first discussed about what do you mean by the electric field lines. In electric field lines, a force may be defined as the curve along which are all positive charge would tend to move when free to do so on an electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point.
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी चार्ज के फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं और जो हमको चार्ज का ऑलवेज डायरेक्शन बताता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ चार्ज एट एवरी पॉइंट। देयरफॉर important properties: lines of force are continuous curve without any breaks। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो भी हमारे पास एक डायरेक्शन से साउथ नॉर्थ चलती हैं, नॉर्थ साउथ से अंदर और बाहर जिस तरीके से चलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं कि जहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज और एक अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव से निकलकर और नेगेटिव की तरफ एंटर करेंगी। ओके, और आप ध्यान रखिएगा, टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी भी ये दोनों लाइनें नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करती हैं। सेकेंड, लाइन्स आर originated from पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। यानी कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end from negative charge। Okay students, next point, they have tendency to contract lengthwise and expand laterally। वो हमारे पास एक ऐसी टेंडेंसी रखती हैं कि लेंथ वाइज हमारे पास चलती हैं और एक्सपेंड लेटरली, यानी कि हर पॉइंट जो होता है वो हमारे पास एक टेंजेंट बनाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ऑरिजिनेट होंगी वहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर।